Okay, so we'll start with example 10.4 today. Our task for today is to solve 6 problems, 6 एग्जाम्पल्स, 6 में से 4 एग्जाम्पल और 2 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स हमको आज करने हैं एंड दे आर रिलेटेड टू either force between charges or electric field. So looking at this question, first of all, this question is incomplete. 3 charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at points A, B, C as shown in figure A. Determine the force on A, मतलब particularly इस A चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है ड्यू टू B एंड C, ड्यू टू अदर चार्जेस मतलब B एंड C. तो you cannot find out force on A due to B and C unless you know what are the distances involved. So the diagram is incomplete. This is 4 centimeter. This is 3 centimeter, right? And you must know what is angle theta also. We'll see that at later stages. Either that angle should be given or you can calculate. So let's start with solution. एग्जाम्पल बहुत इजी और इंटरेस्टिंग है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए in the given quantities we already know distances, so I am not going to write it down again, right? So you need to know that हमको force on A due to B and due to C निकालना है, right? तो आपको याद होगा जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था, तो what we said was हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है Q1, Q2, Q3, Q4 and so on, Qn. We wanted to calculate what is total force on charge Q1. तो मैंने बोला था force on charge 1 Q1 is equal to force on charge 1 due to 2 plus force on charge 1 due to 3, so on force on charge 1 due to n, right? ये हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक जनरल डेफिनेशन लिखा था एंड देन वी हैव मेंशन्ड दैट हमने ये एक पॉइंट वहां पे नोट किया है that force on 1 due to 2, force on 1 due to 3 and so on, this we can find out with the help of Coulomb's law, right? You have to remember one thing कि जब आप यहाँ पे as addition लिख रहे हो, you need to remember these are all vectors. So you need to remember direction of the forces. Force on 1 due to 2 is directed from 2 to 1, right? Matlab basically it is this direction, force on 1 due to 2. Force on 1 due to 3 is this direction, right? So you always have to take into consideration direction when you are calculating what is the total force on a given charge due to all other charges. तो हमारे आज के एग्जाम्पल में 10.4 में I will be first talking about directions because that is what is the most important. So force on A due to C is this direction FAC bar, मतलब ये है FAC bar, right? Force on A due to B is in this direction, मतलब this is FAB bar, which means I have one force like this and other is more or less here, more or less. Okay, so this is FAB bar, this is FAC bar, और अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा,
and you're supposed to find out resultant, and the resultant of these two forces is diagonal. तो ये आ गया resultant force F bar, right? So F bar is equal to FAB bar plus FAC bar, right? If you want to find out magnitude of the resultant force, you know magnitude of resultant force F bar का modulus, it is equal to under root of FAB square plus FAC square plus 2 times of FAB FAC cos of angle between the two. Okay, right. So let me just write it in more proper way. So I can write this as this whole raised to half. Whole raised to half. Okay, right. Matlab, what do we need to know is what is FAB, what is FAC, what is theta angle. ये आपको पता होना चाहिए. And by the way, you can find out this side AC because it is just hypotenuse. So 4 square plus 3 square का root 5 आ गया. Now, if you know all the three sides of triangle, you can find out cos theta as well. तो हम वो solve करेंगे, right? So first task is to find out what is FAB bar. Instead of saying FAB bar, I will just calculate magnitude of FAB. So FAB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 QA QB upon RAB square. Direction we don't involve at this point of time क्योंकि हमने already vectors का resultant देख के equation number 1 बना लिया है. तो we don't need to reconsider direction. हमने already direction equation number 1 में include कर लिया है. So we don't need to reconsider direction. नहीं तो आप बोलोगे फिर FAB बाहर था and you are just writing down magnitude. Yes, I am just writing down magnitude because I have already taken into consideration direction in equation number 1. So FAB is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 की वैल्यू होती है 9 into 10 power 9. QA charge on A is 2 microcoulomb 10 power minus 6. QB charge on B is 3 microcoulomb 3 into 10 power minus 6 upon RAB. Distance between A and B is 4 centimeter, which is 4 into 10 power minus 2 meter का square. So you have to solve this. So FAB is equal to easy है ये 9 into 2 into 3 into 10 power minus 3. ये 10 power minus 6 12 और plus 9. नीचे आपका आएगा 8 into 10 power minus 4. 1 जा 4 जा. तो ये आपका आ गया 27/4 into 10 power minus 4 ऊपर गया तो plus 4 होगा तो 10 power 1. तो 27/4 ये आपको सॉल्व करना है एंड ऑफ कोर्स इट इज जस्ट सॉल्व इट. तो जो भी आपको मिलेगा फाइनल आंसर शुड बी 33.7 न्यूटन. After solving this, let me see if I have missed something. I don't think I have missed something, but 4 square is 16. Yes, तो नीचे 16 आएगा. I'm sorry for that. नीचे 8 नहीं आएगा. I am sorry because I just squared 2 का square लिख दिया. So 4 और बाहर 2 था ऐसा मैं assume करके चल रहा था. तो this is 16. Fine.
तो नाउ मतलब ये कैंसिल आउट करने के बाद 8 आएगा, तो एनीवेज इट इज सिंपल। ये आपका आ गया 27/8, 27/8 इंटू 10 -3, और ऊपर ये -10 पर माइनस ऊपर जाके प्लस होगा, तो 27/8 3.34 इंटू 10 33.4 न्यूटन का आपको फोर्स मिल गया FAB। Also you can find out FAC in similar way, 1/4 pi epsilon 0 QA QC by RAC square। तो आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 1/4 pi epsilon 0 is 9 × 10⁻⁹। QA की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, तो 2 × 10⁻⁻6, and also the value of QC is 4 microcoulomb, 410⁻⁶ coulomb अपॉन RAC। A और C का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर होगा। Then it is simple task to calculate this। तो ये आपका आ गया 9 × 2 × 4, 8 × 9 is 72। So I'll directly write down this 72 × 10⁻⁻3 upon 25 × 10⁻⁻4। So 72/25 is slightly less than 3, तो 2 point something आएगा, 2.88, 2.88, और ये 10⁻1 हो जाएगा, तो 28.8 न्यूटन का फोर्स आ गया FAC। Therefore you have FAC is equal to 28.8 N। Okay, then from the diagram what you can see is cos theta is adjacent side upon hypotenuse। Okay, so it is 4/5, and then we will write down the formula for force, which is under root of FAB square plus FAC square plus 2 times of FAB FAC cos of theta। So this is equal to FAB square 33.4 का स्क्वायर प्लस 28.8 का स्क्वायर। इफ यू वांट आप यहाँ पे इसको इतना सिंप्लीफाई मत करो, इफ यू वांट अप टू यू, राइट। तो 72/25 इंटू 10, तो ऐसा भी लिख ही सकते हो आप, डजंट मैटर रियली। 28.8 का स्क्वायर करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ, बट इन एनी केस इट इज अप टू यू, हाउ डू यू डू कैलकुलेशंस। So this is 28.8 cos theta, if I'm not wrong, was 4/5, right? So you have to calculate all this, and you will be doing this with the help of log tables. I can do it with the help of calculator because I don't have to give exams and I am allowed to use calculator। and log table से आपको स्क्वायर मिलता है। लॉग बुक में एक स्क्वायर का टेबल होता है, उसमें 33.4 ढूंढना है और उसका स्क्वायर करना है, वहां से मिल जाएगा स्क्वायर आपको। तो 33.4 का स्क्वायर 1115.56, 1115.56 प्लस 28 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 28.8 का स्क्वायर 829.44 प्लस 2 इंटू 33.4 इंटू 28.8 इंटू 4/5 is 0.8, 1539.072। अब इन सबको ऐड करके इन सब का आपको रूट निकालना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट देयर इज नो अदर वे आउट, यू हैव टू डू दिस, करना पड़ेगा तो कर लो।
under root of 1115.56 plus 829.44 plus 1539.07, इन सब का रूट करने के बाद आता है 59.026, 59.026 न्यूटन। ये आपका फाइनल आंसर आएगा और ये करेक्ट भी है, राइट। तो द आइडिया वाज वेरी सिंपल। आपको करना क्या था, यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन डायरेक्शंस। एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, आपको याद होगा मैंने जब वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ बताया था, मैंने बताया था फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज डायरेक्टेड फ्रॉम टू टू वन। तो फोर्स ऑन ए, किस पे फोर्स लग रहा है, ए पे, कौन लगा रहा है, बी, तो डायरेक्शन क्या होगा, बी टू ए, क्योंकि बी फोर्स लगा रहा है इसलिए। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी इज फ्रॉम सी टू ए, तो एफ ए सी और एफ ए बी यू हैव, एंड देन the diagonal of FAB and FAC will be resultant, जो हमको फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने वही बोला है, what is total force on A due to B and C। तो FAB और FAC निकाल लिया और रिजल्टेंट फोर्स क्या है, FAB स्क्वायर प्लस FAC स्क्वायर प्लस 2 FAB FAC cos थीटा रेज टू हाफ, एंड cos थीटा कैसे फाइंड करते हो, फ्रॉम दिस डायग्राम, राइट। तो डायग्राम में ये वैल्यू और ये वैल्यू मिसिंग था, इन दोनों वैल्यूज के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, और इन दोनों वैल्यूज के बिना हाइपोटेन्यूज नहीं आएगा, हाइपोटेन्यूज के बिना कॉस थीटा की वैल्यू भी नहीं मिलेगी, राइट। गुड, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाकी तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी सिंपल है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है 1.4570 क्यू ए क्यू बी बाई आर ए बी स्क्वायर, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, नथिंग डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। Gap between two electrodes of the spark plug used in an automobile engine is 1.25 mm. If the potential of 20 volt is applied across the gap, what will be the magnitude of electric field between the electrodes? By the way, I am going little off the track, but क्वेश्चन सिंपल है, इट इज जस्ट अ जोक क्वेश्चन, वो तो ठीक है, बट ये स्पार्क प्लग क्या होता है ऑटोमोबाइल इंजन में? इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ बजाज, आप, पता नहीं, बट व्हेन आई वाज इन 11th ये बहुत आता था, बजाज डी टी एस आई, तो पल्सर डी टी एस आई, तो वेन क्रेजी, पीपल यूज्ड टू टेल मी आई हैव बॉट 150 पल्सर डी टी एस आई, पर वो डी टी एस आई का फुल फॉर्म किसी को पता नहीं था, दैट इज डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। ओके, सो ट्विन स्पार्क इग्निशन, गाड़ी का इंजन चालू करने के लिए आपको उसमें जो फ्यूल डालते हो उस फ्यूल को जलाना पड़ता है, मतलब बर्न करना पड़ता है, उसके लिए चाहिए स्पार्क। उसके लिए आपको दो प्लेट्स के बीच में, देर आर टू प्लेट्स, देर आर टू इलेक्ट्रोड्स, इसके बीच में यू नीड टू हैव करंट, राइट, स्पार्क करना पड़ता है। विदाउट स्पार्किंग द इंजन विल नॉट टर्न ऑन, तो उसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। ओके, तो ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन आई वाज इन 11th, ये डीटीएसआई पढ़ने के बाद आई वेंट इनटू डिटेल्स, तो समझा कि अच्छा स्पार्क प्लग भी कुछ होता है, राइट। एंड एंड इफ यू यूज मोटरसाइकिल, उसका स्पार्क प्लग इंजन पेट्रोल टैंक के नीचे ही होता है स्पार्क प्लग, वो कैप निकाल लिया तो गाड़ी चालू नहीं होता। सो यू कैन check, go online and check, it is very easy, you can directly see पेट्रोल टैंक के नीचे ही एक ब्लैक कैप का प्लग होता है, दैट इज स्पार्क प्लग। वो निकाल लो, गाड़ी चालू नहीं होगी, पुट इट अगेन, स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो गया। एनीवेज, सो देयर इज दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ये दो प्लेट्स है, इलेक्ट्रोड्स है, उसमें गैप है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू आस्क यू इज वेरी सिंपल, उन्होंने बोला है ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है, दैट इज लेट अस से d, which is 1.25 mm, that is 1.25 into 10 power minus 3 meter, very small,
right? And if the potential of 20 volt is applied across the gap, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो potential difference है, that is of 20 volt. So there is a potential of 20 volt between these two plates. Correct. So why I said it's a joke question, because you must know, मैंने कल जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन क्यू, फिर मैंने बोला था ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, फिर मैंने ये भी बोला था दैट नॉर्मली वी यूज वोल्ट पर मीटर. ओके, नॉर्मली वी यूज वोल्ट पर मीटर का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो गिवन बाय, so I'll write down one by one. What is given is V is 20 volt, potential difference between two electrodes, distance between two electrodes is this, and we are supposed to find out, हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड. एंड इंपॉर्टेंट थिंग, वोल्ट पर मीटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स. तो इजी फॉर्मूला है, इसका मतलब आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ V by D करना है, दैट्स इट. तो E is equal to V by D. V value is 20 and D value is 1.25 into 10 power minus 3. ये इजीली आना चाहिए आपको. 1.25 into 4 is 5, into 8 is 10, into 16 is 20. तो 16 into 10 power 3 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स है. ओके, so very simple question it was, but by the way a good question, because at least now you know what is the meaning of spark plug, what is twin spark ignition, what is triple spark ignition, so on so forth, right? Good. तो simple question था, right? तो ये चीज, if you really want to understand science, go into basics. अभी एक आपके लिए as just a fun question I am leaving. बजाज पहले कावासाकी था, कावासाकी जापानीज है, और जापानीज ने पहली बार एक केटेक इंजन लाया था, कावासाकी टेक, राइट? ओके, फिर बजाज ने भी यही कर दिया, कावासाकी से बजाज अलग हो गया, बजाज का भी टेक इंजन आ गया. और ये टेक का मतलब क्या है वो चेक करो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, so you will realize why I'm saying this. It is, I want to control myself, I don't want to tell you this. So tech क्या है चेक करो, what is TEC, what is full form of TEC, because if you want to do mechanical engineering आपके लिए important है to know what is TEC. ऑटोमोबाइल में जाओगे तो it is definitely important for you. Next question. Next question is again simple and important, and मैंने already एक diagram यहाँ पे बता दिया है which I shouldn't be showing, but anyways, 3 point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle, right angle isosceles triangle है वो, ठीक है, as shown in figure A. What is the magnitude and direction of resultant electric field at point P, which is midpoint of its hypotenuse? मतलब ऐसा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, उसके हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे विल बी बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट चार्जेस, चार्ज A, B and C. It will be because of 3 different charges. Okay, so again the question is incomplete. Why? Because यहाँ पे B पे कितना चार्ज है वो प्रिंट ही नहीं हुआ. So there are a lot of mistakes that I already told you, a lot of mistakes in the new textbook. तो ये 2 माइक्रोकुलम चार्ज है, ये माइक्रोकुलम है यहाँ पे, ये माइक्रोकुलम है यहाँ पे, राइट? गुड. एनीवेज फाइन. अब
द आइडिया इज, ये जो नीचे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, आई शुड नॉट बी यूजिंग दैट डायग्राम, बट एनीवेज, तो मैं वापस से आपको बता देता हूं कि हो क्या रहा है। इफ यू रिमेंबर, किसी भी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे चार्ज है और मुझे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज क्यू का पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इट इज डायरेक्टेड अवे इफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ये हमने कल लिखा भी था, because electric field at any point is the force between that charge q and a +1 coulomb charge at point p. So electric field is always directed away from source charge, correct? मतलब मतलब ऐसा, उसका ऐसा मतलब होता है, for point p electric field a due to charge at a, it is away, है ना, यहाँ पे चार्ज a है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट a which is +10 microcoulomb, the direction is this। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a का डायरेक्शन, करेक्ट, सिंपल। देन you have another charge over here at c, this is also +10 coulomb microcoulomb charge। तो ये जो चार्ज है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, इट इज डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, due to charge at A, electric field due to charge at C, they are equal in magnitude but opposite in direction. Why equal in magnitude? Because EA by definition is 1 by 4 pi epsilon 0, charge at A which is 10 microcoulomb upon distance between A and point P, है ना, तो distance RAP। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन विल बी बेसिकली A to P, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे RAP कैप। जस्ट अ मिनट, ये स्क्वायर होगा नीचे, गुड। So what I will do is I will write it down. Electric field at point P due to charge at A vector is 1 by 4 pi epsilon 0. Charge at A upon distance between A and P, and direction is also from A to P. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, इसलिए आर ए पी कैप, मैंने ऑलरेडी बताया ये, यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई केस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट सी इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज एट सी अपॉन आर सी पी स्क्वायर, एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम सी टू पी, अगेन सी से पॉइंट पी की तरफ है, राइट। But what we know is charge at A and charge at C, they are equal 10 microcoulomb, and distance RAP and distance RCP are also equal. Therefore EA bar and EC bar are equal in magnitude and opposite in direction. Therefore EA bar and EC bar will cancel each other. Therefore electric field at point P will be only
due to charge at B, right? So electric field at point P will be only due to charge at B, और charge at B is also plus 2 microcoulomb, मतलब उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, from B to P. अब आपको समझ जाएगा ये डायग्राम, है ना? EA और EC इक्वल एंड अपोजिट, दे आर कैंसल, सो कैंसल आउट, सो रिजल्टेंट इज ओनली EB, मतलब आपको सिर्फ EB फाइंड करना है. वेरी सिंपल थिंग. So you just have to find out EB. Therefore, electric field at B is equal to, कैसे find करोगे? Electric field at point P is only due to electric field of charge at B, which is equal to 1 by 4 pi epsilon 0. Charge at B upon distance between B and P square. Right. Correct. How do you find out this distance BP? You should know. It is very simple thing. You should know this. बहुत easy है. कैसे तो आपके ऊपर है. This is 90 and BP is angle bisector, मतलब 45, right? तो ये भी 90 है, right? तो 45 45 90 से भी आ सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ना. This value of angle bisector for a right angle isosceles triangle, ये पता होना चाहिए. But anyways, आपको पता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पता हुआ तो you can just find it out like this. Cos 45 is opposite side, adjacent side upon hypotenuse, right? तो ऐसा भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है वो. You can just find it out. So BP will be equal to, मतलब distance RBP will be equal to, okay? So this distance BP is 5 by root 2. This is distance between B and P. Therefore, अब आपके पास सारी required information है to find out electric field at point P. 1 by 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9. Charge at B is 2 microcoulomb. Distance you already have found out, इसका square कर लोगे, and then you will be solving it. 9 into 2 into 10 power plus 3, 25, और रूट 2 का स्क्वायर 2, और वो ऊपर जाएगा into 2. तो 9 into 2 18 into 2 36 by 25. 36 by 25 is around 1.4 if I am not wrong. 36 by 25 is around 1.4. So let me see what has went. Something is there which I have. Let me check. Just a minute. या तो फिर बुक में मिसप्रिंट होगा as usual. 36 by 25. ये तो गलत नहीं है हमारा. That is correct. तो 1.44 है. 1.44 into 10 power 3. तो गलत कहाँ पे हुआ? 10 power 9 minus 6 is 3. Correct. So nothing wrong. टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट करके रखा है ये भी. 10 पावर 15 बोल दिया इसको, मतलब ये -6 को +6 कर दिया होगा उन्होंने. तो इट इज ओके, फाइन. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. यू कैन राइट डाउन वोल्ट पर मीटर, यू कैन राइट डाउन न्यूटन पर कूलम. ठीक है. डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम बी टू पी. ओके. तो मैं वापस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, एंड सच क्वेश्चंस आर आल्सो एक्सपेक्टेड फॉर जेडब्ल्यू नीट. एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC. ए और सी पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और बी पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है. आपको हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू ऑल दीज 3 चार्जेस. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी रिजल्टेंट ऑफ electric field due to A, due to B, and due to C. But electric field due to A and C, they are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction, so they cancel out.
राइट, गुड। और ऐसे क्वेश्चंस मैं जेडबल नीट में ओरली करवाने वाला हूँ जस्ट बाय द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। जैसे अभी है यहाँ पे E and EC cancel out, so only is EB. So whatever electric field we will be getting at point P will be because of charge at B. That's it. वही हमने किया है and finally we have our answer. So it is pretty simple thing. Next question. A simplified model of hydrogen atom consists of an electron revolving about a proton, around a proton होना चाहिए, ये भी गलत है, should be around a proton at a distance of 5 into 10 power minus 11 meter. The charge on a proton is plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Calculate the intensity of electric field due to proton at this point. So सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन विच इज इन ऑर्बिट over here, and the distance between these two is given to you, that is r. So in given quantities, you know distance between these two charges is 5.3 into 10 power minus 11 meter. Charge on proton is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge on electron is same but with negative sign. You are supposed to find out electric field intensity due to proton at this distance. It is simple. So you are supposed to find out electric field intensity. तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर लेते हैं. फोर्स ऑन प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ऑन प्रोटॉन, ये भी फाइंड कर लेते हैं. दे आर एक्चुअली सेम. तो वी विल जस्ट कैलकुलेट फोर्स आल्सो एडिशनली. फोर्स भी निकाल ही लेते हैं, डेटा है तो कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हो जाएगा एक. राइट, फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. Right. So formula is very simple. Electric field you already know is 1 by 4 pi epsilon 0. Charge upon distance square, charge upon of proton upon distance square. Once you have electric field, we already know E is equal to F by Q. तो फोर्स मिल जाएगा. हाँ, F by Q ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल रहे हो? प्रोटॉन का. फोर्स किसका है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का. तो इसलिए मैंने पी लिखा था बिटवीन दिस. अपॉन चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन. मैंने कल ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. तो एडिशनली वी विल बी फाइंडिंग आउट फोर्स. तो सॉल्यूशन, right. First, E is 1 upon 4 pi epsilon 0, 9 into 10 power 9. Charge on proton is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb upon distance का square. Distance is 5.3 into 10 power minus 11 square. Right? तो ये आपको solve करना है. It is simple task. 16 9 जा सब किसको आना चाहिए, 144 होता है. तो 1.44 ये वैल्यू आएगी ऊपर, है ना. 14.4 आएगी, 14.4 बिकॉज 16 into 9 is 160 minus 16 और पॉइंट है तो पॉइंट एडजस्ट कर लिया. 9 और 19 माइनस 19 है तो 10 पावर माइनस 10 आएगा. 5.3 का स्क्वायर यू शुड नो, आई मीन शुड नो मतलब यू शुड नो हाउ टू फाइंड इट आउट. ओके, तो इजी है. 53 into 53 करना सबको आता ही होगा. नहीं आता है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको ये सारे काम लॉग बुक से करने हैं, बिकॉज लॉग बुक इज अलाउड फॉर यू टू यूज.
So it is 28.09 into 10 पावर माइनस 22. इसको सॉल्व करो तो 14.4 divided by 28.09 is roughly 0.5 तो है ही 14 42 था but exactly 0.512 into 10 power minus 22 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा तो 10 power 12 बचेगा. Right, so this is the amount of electric field that you have. So finally 5.12 into 10 power 11 Newton per coulomb इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया. फोर्स भी फाइंड कर ही लेते हैं. सो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. So electric field due to proton is 5.12 into 10 power 11 and charge on electron is minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Right. So you should know that the force will have a negative sign which means that the force is positive. मतलब attractive. Sorry to say positive. तो जब आपका फोर्स के इक्वेशन में माइनस साइन आ जाए तो दैट मीन्स द फोर्स इज अट्रैक्टिव. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. इफ यू हैव साइन ऑफ फोर्स एज नेगेटिव देन दैट मीन्स फोर्स इज अट्रैक्टिव. तो ये आ जाएगा 8.16 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन. हो गया. So what we have done is we have just solved extra question, I mean extra part here, which we were not asked. हमको सिर्फ electric field हुआ था. We have additionally solved for force. Okay, then let's move to unsolved example now. First unsolved example. Two small spheres 18 centimeter apart. मतलब सबसे पहले तो दो स्पीयर्स मतलब दो चार्जेस का डिस्टेंस दे दिया 18 centimeter, which is 18 into 10 power minus 2 meter, have equal negative charges. That is important, that q1 q2 is minus q, both equal है ना, and repel each other by a force, with a force 6 into 10 power minus 8 newton. You are supposed to find out the total charge. Total charge मतलब आपको find करना है, let's say q total, capital Q ये find करना है. तो easy है. So basically you are supposed to find q1 plus q2. q1 is minus q, q2 is minus q, so you're supposed to find out 2q basically. Easy. So which formula will we be requiring here is very simple. Force between two charges 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square. Okay, then it is simple. F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square यूज कर लिया. F हमारे पास है 6 into 10 power minus 8. 1 by 4 pi epsilon 0 है हमारे पास. 9 into 10 power 9. q1 minus q, q2 minus q, तो minus q into minus q is q square अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस हमारे पास है 18 into 10 पावर minus 2 का स्क्वायर. देयरफॉर हमको मिल जाएगा यहाँ से q स्क्वायर एज 6 into 10 पावर minus 8 into 18 का स्क्वायर. यू शुड नो व्हाट इज 18 स्क्वायर. ये पता होना चाहिए. 18 स्क्वायर इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, है ना. 20 स्क्वायर इज 400. तो 18 स्क्वायर कितना ये पता होना चाहिए. अगर आपको नहीं पता तो यू शुड बी यूजिंग ट्रिक्स एंड I mean you should know 11 square is 121, 12 square is 144, 13 square is 169, 14 square is 196, 15 square is 225, so on so forth. तो 18 square 300 और 400 के बीच में आता है and the last digit is 4. So from that I can tell you it is 324. Okay.
इंटू 10⁻⁻⁴। तो सिर्फ मैंने ये टर्म को 6 इंटू 10⁻⁸ के साथ मल्टीप्लाई किया है, दैट्स इट, अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। तो दिस will give me what is q square and okay, तो all right, तो अदरवाइज आप और एक काम कर सकते थे टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू not do squares here, because if I write here that f is 1 by 4 pi epsilon 0 q1 minus q2 minus q2 q square by r square. Our interest is in finding out q, so q square is equal to f r square into 4 pi epsilon 0. तो q is equal to, चलो f पता है आपको 6 इंटू 10⁻⁸ है ना, राइट। आर स्क्वायर को मैं फिलहाल आर स्क्वायर रखूंगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 1 बाई 9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 10⁻⁹, राइट। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 1 अपॉन, है ना, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज 1 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, गुड, राइट। तो व्हाई आई डिड दिस वाज, क्योंकि अब मैं अगर Q लेता हूं तो मुझे मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 10⁻⁸ अपॉन 10⁻⁹, क्योंकि 9 का जो रूट है वो 3 है और r का जो रूट है वो r स्क्वायर का जो रूट है वो r है। तो आई जस्ट वांटेड टू रिड्यूस फ्यू स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई आई डिड लाइक दिस। आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, इट्स ओके, फाइन। r पता है हमको, तो प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस क्यों लिया, स्क्वायर रूट इज प्लस और माइनस, इसलिए प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, इसलिए प्लस माइनस। बट रिमेंबर यहां बोला है टू स्पीयर्स दे हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस, मतलब आई विल बी राइटिंग डाउन माइनस ओनली। सो माइनस माइनस, ये टर्म आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट। अनफॉर्चुनेटली 6 का रूट पता होना चाहिए, नहीं पता तो फिर बुक्स है आपके पास, लॉग बुक। 10 पर प्लस 9 ऊपर गया -9, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको लिखता हूं 6 इंटू 10⁻⁸ एंड -9 इज 17, मैं इसको लिखता हूं 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁻16 इंटेंशनली इंटू r बाई 3। r is 18 into 10⁻⁻2 by 3, ओके। तो ये आपका आ जाएगा माइनस, this thing you have to find from square root table मतलब 0.6, 10⁻⁻16 का स्क्वायर आएगा 10⁻⁸, 1 जा एंड 6 जा, तो 6 इंटू 10⁻⁻2, तो 6 इंटू 10⁻⁻2 बचेगा, मतलब फाइनली यू विल हैव -6 अंडर रूट 0.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम का चार्ज, ओके, राइट, फाइन। तो यू हैव टू सॉल्व दिस थिंग। 0.6 का रूट है 0.77, उस 0.77 को मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 के साथ तो 4 पॉइंट समथिंग समथिंग मिल जाएगा मुझे, तो मुझे मिल जाएगा -4.64 इंटू 10⁻⁻10। हमको 2q चाहिए, डो नॉट फॉरगेट, तो हम लोगों को 2q चाहिए, तो यू हैव टू फाइंड 2 into q, क्योंकि टोटल चार्ज बोला है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ स्पीयर्स, राइट। यू आर सपोज टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन बोथ स्पीयर, दैट इज 2q। so give me a minute, let me make some space, okay।
Therefore, total charge will be minus 2q, of course. So total charge capital Q is minus 2 into Q. तो ये आपका आ जाएगा 4.64 into 2, that is 4.64 into 2 will be 9.29 something. So minus 9.29 into 10 power minus 10 coulomb, right? So this is the final answer. Okay, तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं है, फोर्स का फॉर्मूला यूज करके क्यू निकाल लिया हमने, क्योंकि फोर्स पता है 1/4π0 पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्यू मिल गया। और क्यू मिलने के बाद टोटल चार्ज ऑन टू स्पेयर माइनस टू क्यू, क्योंकि पहले पे माइनस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, टोटल चार्जेस माइनस टू क्यू, राइट। इसका मतलब यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, एंड आई एम श्योर दैट दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज ये कैलकुलेशंस मैंने ऑलरेडी करके रखे थे इसलिए। Okay, so I have cross checked, I have cross verified, so answer is wrong there, so this is correct. Last question for the day. A charge plus q exerts a force of magnitude minus 0.2 newton on another charge minus 2q if they are separated by a distance of 25 centimeter. Determine the value of q. So this is same type of question as we have done just now. So I will keep it as an assignment for you. वही यूज करना है exactly same way. फोर्स दिया है, एक चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, so you just have to find out q. So this is going to be assignment question. Easy है. So we'll just see what we have done so far today. 10.4 में एक ट्राइंगल है, दो साइड्स दिए हुए हैं, तीनों साइड्स पे चार्ज कितना है बताया हुआ है, तीनों वर्टेक्स पे। ए वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पे कितना रिजल्टेंट फोर्स है ये पूछा गया था। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी निकालना पड़ेगा, बट आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड यू शुड नो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ f1 एंड f2 इनटू cos ऑफ थीटा का स्क्वायर रूट, राइट। फिर आपने f1 मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, देन f2 which is force on A due to C, ये फाइंड किया, cos theta फाइंड किया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, डन। So you should be getting 59.026. 10.5, you have two plates, electrodes, potential difference between two electrodes is 20, distance between these two plates is 1.25 mm. You're supposed to find electric field. Electric field is potential difference upon distance between two electrodes. तो इजी है, v by d करना है, खत्म। आपके पास यहाँ पे राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे चार्जेस दिए हुए हैं, ए और सी पे इक्वल चार्ज है, और आपको हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी के मिड पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए ई ए बार एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सी ई सी बार, these two electric fields are equal and opposite, equal in magnitude and opposite in direction, so they will cancel out each other. So the only electric field that you will have at point P, which is midpoint of hypotenuse of right angled isosceles triangle, will be due to point B, मतलब point B पे जो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, सिर्फ उसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, that will be directed from B to P, राइट। फ्रॉम B to P आएगा। आपको ये पता होना चाहिए हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्टेंस PP, नहीं पता होगा तो ये पता होना चाहिए एंगल बाइसेक्टर will make angle 45 with horizontal and 45 with vertical. So it is easy thing. Electric field due to charge at B is 1 by 4 pi epsilon 0. Charge at B upon distance square, तो वो आप कर ही सकते हो। चार्ज एट बी 2 माइक्रोकूलम है, 1 by 4 pi epsilon 0 की वैल्यू 9 to 10 power 9 into 2 into 10 power minus 6 चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये कर लिया तो आपको मिल गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
इन अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सिंप्लीफाइड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यू शुड नो दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन in nucleus. If you have just a proton and an electron, that is the simplified model of a hydrogen atom. Then there's another isotope of hydrogen जिसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन भी आ गया, that is called as deuterium. एक proton, एक न्यूट्रॉन in nucleus and one electron in its orbit is deuterium. Then there's tritium also, दो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन न्यूक्लियस में और एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में, that is tritium. तो सिंप्लीफाइड मॉडल मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्ज ऑन प्रोटॉन और चार्ज इलेक्ट्रॉन पता होता है, हमको बोला है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन. You must know that electric field is directed from proton to neutron electron away from positive charge, and you should know the formula 1 by 4 pi epsilon 0 charge on proton divided by distance square. चार्ज दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्क्वायर करो, वैल्यू डालो, done. Additionally, you can find out force also. This question was good, important, easy. दो स्पीयर है, दोनों स्पीयर पे इक्वल नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच का फोर्स पता है, ऑफ कोर्स रिपल्सिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो, दोनों का डिस्टेंस पता है, हमको बोला है कि टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज मतलब 2q, राइट. तो पहले तो q फाइंड कर लो, है ना. q कैसे फाइंड करेंगे, f इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon 0 q1 which is minus q, q2 which is minus q, मतलब q square by distance square. तो q square मिल गया तो q मिल गया, q मिल गया तो 2 into q कर लो, हो गया टोटल चार्ज, खत्म. इजी इजी टास्क, इजी जॉब, राइट, डन. तो ये जो है एक्सरसाइज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ये न्यूमेरिकल्स का सेकंड है. दिस इज एन असाइनमेंट बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द सेम. डू नॉट worry about if you don't get this value, because as I told you there are a lot of printing mistakes. So solve khud karo aaj. We will stop here. We'll meet again in next 15 minutes for JEE NEET.